हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स। आई होप आप लोग अपने अपने लेवल में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जो कि है इंग्लिश लिटरेचर से। तो आज के वीडियो में भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड. Which period is it? Elizabethan, option A, option B, Victorian, option C, Restoration and option D, Romantic. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नाउ ये रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो तब का पीरियड है जब विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज आए थे. लाइक ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड विलियम शेक्सपियर wrote excessively. Along with him, there are other writers as well, but he is renowned for his best works. So this is your answer. Comedy of manners, ये एक genre है. This is a kind of writing. So that kind of writing flourished during the time of Restoration, during this period. Okay, so this is why C is the answer. Let's move to the question number 6. Congreve and Etheridge are the writer of option A, comedy of humor, option B, comedy of manners, option C, comedy of situation, and option D, none of these. So the right answer is option B, comedy of manners. Congreve and Etheridge are the writers of comedy of manners. इस पीरियड में ये दोनों राइटर्स लिखते थे. Let's move to the next question. A fanciful image or startling comparison is known as. Your options are option A, identity, option B, conceit, option C, imagery, and option D, metaphor. So the right answer is option B, that is conceit. Conceit is a fanciful image or startling comparison, and this makes literary work more advanced. Okay, through comparison, it compares two and two more than two different things, and then it comes to a conclusion which creates in mind very much clarity of picture, and the people will understand the matter in a very candid way. Next question is question number 8. The struggle between two characters or two forces is known as. Option A, conflict, option B, struggle, option C, fighting, and option D, none of these. Right answer is option A, conflict. When two characters, they are in two forces, when they struggle, that is called conflict. Conflict may be two kinds. Option A, outer, and option A, inner, option B, introvert, option C, external, and option D, none of these. Right answer is, of course, number A, that is inner. Conflict may be two kinds, inner and outer. Next question in front of us is Spencer's Astrophel is written on the death of. Option A, Philip Sidney, option B, Arthur Hallam, option C, Edward Young, option D, none of these. Right answer is option A, that is Philip Sidney. This is an elegy, and this is written at the death of Philip Sidney. Next question is secondary epic is known as. Option A, legendary epic, option B, novel, option C, ballad, option D, filmy epic. So here the answer is option A, that is legendary epic. Now we will move to next important question, which is related to Mahabharata and Ramayana. The Mahabharata and the Ramayana are the
Option A novels, option B stories, option C ballads, and option D epics. So these are option D epics. Mahabharata and Ramayana. These two are epics of literature. Epic means a narrative poem where a story is narrated. Next, which kind of poetry had something of UBI Sant motif, the formula of where are they for lamenting the past? Option A lyric, option B elegy, option C ballad, and option D epic. So the right answer is option B, that is elegy or elegy. You can pronounce it in both the ways. So here, something which laments the loss of someone or which laments something related to past, that is written in a poem form, that is called elegy or elegy. Okay. The term criticism is derived from the Greek word kritikos, which means option A able to discern and judge, option B able to criticize, option C able to rebuke, and option D able to penetrate. So here the right answer is option A, that is able to discern and judge. The term used for a break or a pause in the middle of a verse, line, or a kind of pause or break in a line of verse. What is it called? Option A caesura, option B recess, option C sestet, and option D octave. So the right answer is option A caesura. Caesura means a pause or a break in line between two lines. The iambic pentameter, which is verse of 5 feet, in its unrhymed form is known as free verse, verse libre, option C point verse, and option D blank verse. So the right answer is option D, that is blank verse. In blank verse, this is the structure that is to be followed, unrhymed form without any meter. Chevy Chase, Nut Brown's maid, Coleridge, the ancient mariner, Keats, La Belle Dame Sans Mercy, Sir Walter Scott's The Lay of the Last Minstrel, Cowper's John Gilpin are some of the well-known option A ballads, option B epics, option C dramatic monologues, and option D none of these. So the right answer is option A, that is ballads. These all are ballads. Now what are ballads? Ballads are a long song or poem. Okay, a long song or poem. Long song or poem. Whereas an epic is an extended poem. Okay, this epic is an extended narrative poem. Now let's come to dramatic monologue. Dramatic monologue means to talk to oneself. Okay, it is also a part of the play and it is kept secretly by the outsider. And this is seen in all these works. Wordsworth, Coleridge, and Southey are option A, the lake poets, option B, nature poets, option C, classical poets, and option D, neoclassical poets. Option A is the right answer, the lake poets. All these are from Romantic period. The ridiculous misuse of a word is option A, misrepresent, option B, misspelled, option C, male word, option D, malapropism. फ्रेंड्स, malapropism जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है द राइवल से, जिसको लिखा था सेरिडैन ने.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. Whose name is associated with Orientalism? Your options are option A, Jacques Derrida, option B, Ransom, option C, Ferdinand de Saussure, and option D, Edward Said. This is the right answer, that is option D. ये जो ओरिएंटलिज्म है ये सब इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. तो ये सब एक एक करके हम लोग को समझना है, लेकिन हम लोग अभी MCQs कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ आंसर में हम लोग फोकस करेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में दे चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In studies, the after effect of response and resistance to the legacy of colonialism in the field of philosophy and literature, and presents the identity of the colonized and its culture, representing the unpresented and voicing the unvoiced, with post not available in colonialism. It refers to option A, post-colonialism, option B, colonialism, option C, futurism, and option D, nationalism. So the answer is option A, that is पोस्ट कॉलोनियलिज्म. और यहाँ पे जो भी बातें बताई गई हैं, रेस्पॉन्स, रेजिस्टेंस, ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड हैं. लैंग्वेज का ओरिजिनेशन, उसके बाद कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, और जैसे जैसे शिफ्ट हुआ ये एक जगह से दूसरे जगह, तो उसका जो फॉर्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं रहा. जिस जगह पे शिफ्ट हुआ, जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म को उन्होंने ऑप्ट किया. तो मॉडिफिकेशंस लैंग्वेज में आते गए और वैसे ही लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जहाँ से ओरिजिन हुआ था वो स्ट्रक्चर इन लोगों के लिए बहुत ही यूनिक था, जो कि उनको एक्सेप्ट करने में वक्त लगा. तो अभी भी जो भी मॉडिफाइड वर्जन है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी. तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, और हम लोग आंसर डिस्कस कर चुके हैं, वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिविज्म इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए, जैकस डेरिडा, ऑप्शन बी, फर्डिनांड de Saussure, ऑप्शन सी, ऑगस्टे कॉमेटे, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे पॉजिटिविज्म जो एसोसिएटेड है वो है ऑगस्टे कॉमेटे, और इसको पॉजिटिविज्म जो है उसके बारे में उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा हम लोगों को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया है. हम लोगों को पढ़ना चाहिए उसको. वो बताते हैं पॉजिटिविज्म के सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा मोटिवेटिंग चीज़ नहीं है जिससे कि हम लोग इंस्पायर हो सकें. तो जो पॉजिटिविटी है वो हम लोगों को अपने खुद में जनरेट करना पड़ेगा. बाहर के भरोसे रहेंगे तो वो हम लोगों के लिए टाइम टेकिंग और फ्यूटाइल हो सकता है. इसलिए पॉजिटिविज्म को जनरेट करना है खुद के अंदर. चलिए इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. हु रोट द एसे स्ट्रक्चर, साइन, प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. ये क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक से. लिंग्विस्टिक LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक. तो लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि हम लोग लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है. हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी हो, एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. तो उसके बारे में बात हो रही है. साइन तो लैंग्वेज का इंटीग्रल पार्ट है, बिना साइन के कुछ नहीं हो सकता. और प्ले, उसका परफॉर्मेंस. इन द डिस्कोर्स का मतलब है एक लंबा चौड़ा जो पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं वैसा. ठीक है. तो ये डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस किसने लिखा था? हु रोट द एसे स्ट्रक्चर, साइन, प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैकस डेरिडा.
जैकस डेरिडा जो कि है राइट आंसर, और बाकी ऑप्शन है रैंसम, लेविस एंड एलियट। तो जैकस डेरिडा आपको याद करना है। जैकस डेरिडा और फर्डिनांड द सोस्योर ये एक्सेसिवली लिंग्विस्टिक में यूज होने वाले वर्ड्स नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन absurdist play. It is written by Samuel Beckett. It is option A, Waiting for Godot, option B, Waiting for Mahatma, option C, The Nowhere Man, and option D, none of these. तो यहाँ पे absurdist मतलब जिसका सिर पैर कुछ भी नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको कहते हैं इट इज़ एन absurdist प्ले। प्ले हो गया ड्रामा, और absurdist मतलब जिसमें कैरेक्टर्स भी वियर्ड हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी वियर्ड है। वैसे प्ले के राइटर है सैमुअल बेकेट। लेकिन एक बात अच्छे से मैं बता दूं, ये इलॉजिकल एब्सर्डिस्ट लगता है जब हम लोग इसको सुपरफिशियल वे में देखते हैं। स्टेज में कोई परफॉर्म कर रहा है और उसका क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो एक झलक देखने पे पता नहीं चलता। लेकिन जब हम लोग उसको रिलेट करेंगे मॉडर्न लाइफ के साथ जो कि फ्यूटाइल है, ये जो एब्सर्डिस्ट प्ले है वहाँ पे क्या होता है कि 4 जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, 4 में से 2 लोग वेट कर रहे हैं किसी के आने का, लेकिन वो कौन है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये कुछ पता नहीं। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे उन लोग वेट कर रहे हैं, दो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं। कभी जूते को पहनते हैं, कभी खोलते हैं, कभी जैकेट को पहनते हैं, कभी खोलते हैं, और अजीब अजीब सी उस अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हैं। तो इसको दिखाया गया है कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है। हम लोग इवेंचुअली परेशान ही रहते हैं, जितना भी कमा लो परेशान रहते हैं, अपना हेल्थ इश्यूज़ रहता है, समाज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं पा सकते। तो हम लोग किस लिए जी रहे हैं? इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे नॉलेज है, उसको स्प्रेड करके एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं और अपना लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो अंडरलाइंग मीनिंग है उसको देखना है, और उसी की वजह से ये प्ले, इवन दो इट इज़ एन एब्सर्ड प्ले, इसका सिर पैर नहीं होने के बावजूद भी इसका पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, वेटिंग फॉर गोडो। प्रोनाउंसिएशन होगा गोडो, GODOT, गोडोट नहीं होगा, गोडो, टी साइलेंट होगा, ठीक है। गोडो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, गॉड प्लस इडियट। इडियट गॉड इसलिए क्योंकि नॉलेज हम लोग इंसानों को बहुत सारा दिया गया है डिफरेंट तरीके से। इडियट इसलिए क्योंकि हम लोग वो नॉलेज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और जब हम लोग करेंगे तब ये एब्सर्डिटी निकल जाएगी और एक प्रॉपर फिलैंथ्रोपिस्ट मैसेज जाएगा रीडर्स को। इसलिए इसको एब्सर्डिस्ट प्ले कहा गया है, लेकिन अंडरलाइंग जो मैसेज है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा है। Last question from this video is, what is called when a foolscape paper is folded twice resulting in 4 leaves, that is 8 pages? Option A, quatrain, option B, quarto, option C, quarter, and option D, none of these. तो यहाँ पे जब हम लोग पेज को फोल्ड करेंगे और उसको खोलेंगे तो 8 पेजेस बन जाता है, और उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन बी, क्वार्टो, उसको कहेंगे क्वार्टो, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना नॉलेज को एनहांस करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।